औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक आपने 8वें चैप्टर की पहली 4 वीडियोस देख ली होंगी, जिसमें हम 380 नंबर हदीस तक कवर कर चुके हैं और आज हम उसी चैप्टर नमाज के अहकाम व मसाइल में उससे आगे यानी कि उससे 381 नंबर हदीस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमसे अबुल वलीद हशाम बिन अब्दुल मालिक ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने कहा हमसे सुलेमान शेबानी ने अब्दुल्ला बिन शद्दाद के वास्ते से उन्होंने उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा का यानी छोटे मसले पर नमाज पढ़ा करते थे, यानी कि जो छोटी सी जगह थी जहाँ सिर्फ सजदा किया जा सकता था या हाथ रखे जा सकते थे, पाँव जो है वो नहीं रखते थे इस पे। नरेटेड मैमूना अल्लाह द पास्टर यूज्ड टू प्रे ऑन खुमरा अ शॉर्ट पीस ऑफ क्लॉथ on which we can only prostrate। हदीस नंबर 382 है कि हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने उमर बिन उबैदुल्लाह के गुलाम अबू अल नज़र सालम के हवाले से उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने बतलाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सो जाती और मेरे पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबला में होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो मेरे पाँव को आहिस्ता से दबा देते, मैं अपने पाँव समेट लेती और जब आप खड़े होते तो मैं उन्हें फिर फैला देती। इन दिनों घरों में चिराग भी नहीं हुआ करते थे, तो इस वजह से ऐसे मामलात होते थे। नरेटेड अबू सलामा Aisha, the wife of the Prophet, said, I used to sleep in the front of Allah's apostle and my legs were opposite his Qibla, and in prostration he pushed my legs and I withdrew then, and when he stood I stretched them. Aisha added, in those days the houses were without lights। हदीस नंबर 383 हमसे यह्या बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने अकील से उन्होंने इब्ने शहाब से उनको उर्वा ने खबर दी कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बिछोने पर नमाज पढ़ते और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और किबला के दरमियान में इस तरह लेटी होती जैसे नमाज के लिए आगे जनाजा रखा जाता है। तो ये भी पिछली हदीस से ऐसी ही है कि आप आयशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होती थी। नरेटेड आयशा अल्लाह द पास्टर प्रेड while I was lying like a dead body on his family bed between him and his qibla, like this hadith is same as a previous one। हदीस नंबर 384 है हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने हदीस बयान की यजीद से उन्होंने इराक से उन्होंने उर्वा बिन ज़ुबैर थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिछोने पर नमाज पढ़ते जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोते, और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और किबला के दरमियान इस बिस्तर पर लेटी रहती। पिछली हदीसों से मिलती जुलती हदीस है। नरेटेड उर्वा द प्रॉफिट प्रेड while Aisha was lying between him and his qibla on the bed which they used to sleep, same hadith like the previous one। हदीस नंबर 385 हमसे अबू वलीद हशाम बिन अब्दुल मालिक ने बयान किया, मुल्क ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे बशर बिन अल मुफज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे गालिब कतान ने बकर बिन अब्दुल्ला के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, फिर सख्त गर्मी की वजह से कोई हम में से कपड़े का किनारा सजदे को की जगह रख देता। नरेटेड अनस बिन मालिक वी यूज्ड टू प्रे विद द प्रॉफिट एंड सम ऑफ अस यूज्ड टू place the ends of their clothes at the place of prostration because of scorching heat। इसके बाद हदीस नंबर 386 हमसे अहमद बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू सलमा सईद बिन यजीद अज़दी ने बयान किया, कहा मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूतियाँ पहनकर नमाज पढ़ते थे, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, यानी कि वो जूते पहनकर नमाज पढ़ते थे। नरेटेड अबू मसलमा सईद बिन Yazid al-Azdi asked Anas bin Malik whether the Prophet had ever prayed with his shoes on. He replied, yes। हदीस नंबर 387 हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने आमश के वास्ते से उसने कहा कि मैंने नबी इब्राहिम नखा से सुना, वो इमाम बिन हारिस से रवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, उन्होंने पेशाब किया, फिर वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसा किया, फिर खड़े हुए और मौज़ू समेत नमाज पढ़ी। आपसे जब इसका मतलब पूछा गया तो फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते देखा है। इब्राहिम नखी ने कहा कि यह हदीस लोगों की नज़र में बहुत पसंदीदा थी क्योंकि जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर में इस्लाम लाए थे। तो इस तरह मतलब कि आप जूतों में भी नमाज पढ़ सकते हैं अगर जूते आपके पाक हैं। तो नरेटेड इब्राहिम हमाम बिन हारिथ said I saw Jarir bin Abdullah urinating, then he performed ablution and passed his wet hand over the khufs, stood up and prayed। He was asked about it, he replied that he had seen the Prophet doing the same। They approved of this narration as Jarir was one of those who embraced Islam
very late. So you can pray in even shoes if those are clean. So اس کے بعد حدیث نمبر 388 ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا آمش کے واسطے سے، انہوں نے مسلم بن سبیہ سے، انہوں نے مسروق بن اجداد سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی. Narrated al-Mughira bin Shu'bah, I helped the people in performing ablution and he passed his wet hand over his hoofs and prayed. This hadith was already mentioned in the previous chapters too. حدیث نمبر 389 ہم سلت بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل کے واسطے سے، وہ ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا. جب اس نے نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی پڑھی ہے؟ ابو وائل نے ہی نہیں پڑھی. ابو وائل نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسی نماز پڑھتے تو مر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا. Narrated Huzaifa that he saw a person bowing and prostrating imperfectly when he finished his salat. Huzaifa told him that he had not offered salat. The sahab narrated added, I think that Huzaifa also said, were you to die, you would die on a sunnah other than that of Muhammad. یہ تھی حدیث نمبر 389. اس کے بعد حدیث نمبر 390 کی جانب پڑھتے ہیں. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے حدیث بیان کی بکر بن مضر نے جعفر سے، وہ ابن حرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بخینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی. اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اس طرح حدیث بیان کی ہے. تو اس کے بعد نریٹڈ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ when the prophet prayed he used to separate his arm from his body so widely that the whiteness of his armpits was visible. یہ تھی حدیث نمبر 390. اس کے بعد ہم اگلی حدیث یعنی کہ حدیث نمبر 391 کی جانب بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 391 ہے کہ ہم سے عمر بن عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن مغدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے منصور بن سعد نے میمون بن سیاح کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو. یعنی کہ آپ اس پناہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعایت دیا اس میں آپ خیانت نہ کریں. انس بن مالک Allah the Apostle said, whoever prays like us and faces our Qibla and eats our slaughtered animals is a Muslim and is under Allah and his apostle protection. So do not betray Allah by betraying those who are in his protection. اس کے بعد ہم حدیث نمبر 392 کی جانب پڑھتے ہیں. ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے حمید طویل کے واسطے سے انہوں نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. پاس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرف نماز پڑھنے لگیں اور ہمیں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر نماز پڑھیں اور ہمارے ذبح کرنے کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے، مگر کسی کا حق کے بدلے میں اور باطن ان کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. Narrated Anas bin Malik, Allah the Apostle said, I have been ordered to fight the people till they say none has a right to be worshipped but Allah, but if they say so, they pray like our prayers, face and Qibla and slaughter as we slaughter, then the blood and the property will be sacred to us and we will not interfere with them except legally and their reckoning will be with Allah. حدیث نمبر 393 ہے کہ ابن ابی ابن مریم نے کہا ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی. علی بن عبداللہ بن مدینی نے فرمایا کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمید طویل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میمون بن سیاح نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیز حرام کرتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے. پھر اس کے وہی حقوق ہے جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داری ہیں جو عام مسلمانوں کی ہیں. Narrated Maimun bin Sayyah that he asked Anas bin Malik, O Abu Hamza, what makes the life and property of a person sacred? He replied, whoever says none has the right to be worshipped but Allah, faces our Qibla during the prayers, prays like us and eats our slaughtered animals and is a Muslim, then he is a Muslim and he has got the same rights and obligations as other Muslims have.
दिस इज़ हदीस नंबर 393। इसके बाद हदीस नंबर 394 है कि हमसे अली बिन अब्दुल्ला मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने कहा हमसे ज़ोहरा ने अता बिन यजीद लीसी के वास्ते से उन्होंने कहा अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो उस वक्त ना किबला की तरफ मुँह करो ना पीठ फेरो, बल्कि मशरिक़ या मगरब की तरफ उस वक्त मुँह कर लिया करो। अबू अय्यूब ने फरमाया कि हम जब शाम में आए तो यहाँ के बैतुल खला किबला रुख बने हुए थे। जब हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो हम मुड़ जाते और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से इस्तग़फ़ार करते। और ज़ोहरा ने अता से इस हदीस को इसी तरह रवायत किया है। इसमें यूं कि अता ने कहा कि मैंने अबू अय्यूब से सुना, उन्होंने इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। Narrated Abu Ayyub al-Ansari, the Prophet said while defecating, neither face nor turn their back to the Qibla but face either east or west. Abu Ayyub added, when we arrived in Sham, we came across some lavatories facing the Qibla. Therefore we turned ourselves by using them and asked for Allah's forgiveness. This is hadith number 394. इसके बाद हम अगली हदीस यानी कि 395 नंबर और आज की वीडियो की आखिरी हदीस की जानब बढ़ते हैं। हमसे हमीदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफियान बिन अय्यना ने बयान किया, कहा हमसे उमर बिन दिनार ने कहा हमसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा जिसने बैतुल्लाह का तवाफ उम्रा के लिए किया लेकिन सफ़ा और मरवा की सही नहीं की। क्या ऐसा शख्स बैतुल्लाह के तवाफ के बाद अपनी बीवी से सोबत कर सकता है? आपने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ किया और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकअत नमाज पढ़ी, फिर सफ़ा और मरवा की सही की और तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना है। ये सूरह अल-अहज़ाब की 21 नंबर आयत है जो कि इसमें इस हदीस में बयान की गई है, यानी कि इसी तरह आपने करना है जैसे हमारे नबी ने किया। नरेटेड अमर बिन दिनार, I asked Ibn Umar, can a person who has performed the tawaf around the Kaaba or Umrah for Umrah but has not performed the sa'i tawaf for Safa and Marwa have sexual relation with his wife? Ibn Umar replied, when the Prophet reached Makkah, he performed the tawaf around the Kaaba and offered a 2 rakat prayer at the place where behind station of Ibrahim and then performs tawaf of Safa and Marwa, and verily in Allah's apostle you have a good example. This is Surah Ahzab ayat number 21। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। कल से हम 396 नंबर हदीस और इस चैप्टर की छठे वीडियो की जानब बढ़ेंगे। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।